Hello students, today we are continuing the fourth part of Photoshop. We will first start with the introduction of Marquee tool. So as you all know that Marquee tool is one of the most important tools of Photoshop. What is the Marquee tool used for? Marquee tools are used to select a rectangular elliptical area of an image. Okay. So whenever we have to select a rectangular or elliptical portion of an image, we use Marquee tool. Generally, Marquee tool is used for making changes to a selective area of a picture. So, what is the main purpose that we use Marquee tool? Marquee tool is used for making editing changes in the selective area of an image. Okay. So, now rectangular Marquee tool. How we can go to the rectangular Marquee tool? We can go to the rectangular Marquee tool by simply clicking on the rectangular Marquee tool icon. Then click and drag the area to finalize the selection of the Marquee tool. So plain and simply this works. That is, first of all, we need to click on the rectangular Marquee tool, then select the area for the Marquee tool and resize the area so that selection can be done. Now elliptical Marquee tool is another form of Marquee tool where you can select the area elliptically. Okay. So the shape will be different here. You get a free bound shape. Okay. Elliptical Marquee tool gives you more coverage of area for making changes or doing editing than compared to that of the rectangular Marquee tool. So suppose आपको अगर बड़ा एरिया में आपको एडिटिंग करना होगा तो which tool you will use? You will have to go for the elliptical Marquee tool. You got my point? Okay. Okay. Now coming to the lasso tool. Lasso tool is one of the very important tools of Photoshop again. Whenever you need to make some minute adjustments or minute effects of corrections, okay, that means what we call picture correction or refining the edges of a picture. What do you mean by refining the edges of a picture? कभी कभार आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में इरेगुलरिटी होता है. जैसे कि सपोज if you have clicked your picture and you have not combed your hair properly, so the edges of hair are very irregular. तो उसको हम रेगुलर बना सकते हैं यूजिंग द रेक्टेंगुलर लासो टूल या फिर मैग्नेटिक लासो टूल. उससे हम करेक्शंस कर सकते हैं टू मेक द पिक्चर लुक रेगुलर और यूनिफॉर्म. नाउ लासो टूल बहुत सारे प्रकार का आता है, जैसे कि पॉलीगोनल लासो टूल. पॉलीगोनल लासो टूल गिव्स यू अ polygonal area where you can do correction multiple times. So how we do that? First हमें lasso tool के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद उसके अंदर एक polygonal shape दिखेगा. ठीक है. After clicking on lasso tool, you will get the polygonal shape icon where you can refine the edges or corners of the picture. Now magnetic lasso tool में हमें क्या फायदा मिलता है कि you get a free hand दैट कोई भी तरीके का इरेगुलरिटी हो, चाहे वो एजेस में हो, चाहे वो कॉर्नर्स में हो, चाहे वो बॉटम एज में हो, मतलब फ्री बाउंड एरिया में हम लोग काम कर सकते हैं. ओके. एंड बेसिकली इट वर्क्स बाय द लॉजिक ऑफ अ एंकर पॉइंट. एंकर पॉइंट यानी कि you can refine the edge from a starting point to an ending point. Okay. So magnetic lasso tool can help you to correct irregularities between two specific points. Understood? So lasso tool का मेन यही फायदा है कि पॉलीगोनल एरिया में अगर आपको काम करना, रिफाइनमेंट करना है एजेस में, या फिर पिक्चर आपको रिफाइन करना है, एजेस आपको करेक्ट करना है, मतलब एक बाउंडेड एरिया में आप पॉलीगोनल टूल में काम कर सकते हैं. नाउ इफ यू वांट अ फ्री हैंड, मतलब आप फ्री हैंड फ्रीली आप पूरा एरिया वाइज आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हो, देन इट इज एडवाइजेबल यू गो फॉर मैग्नेटिक लासो टूल. बट मेन पर्पस आपको समझना चाहिए कि lasso tool is used for making corrections in the edges of a picture.
दैट मीन्स पिक्चर करेक्ट करने के लिए लासो टूल, और मार्की टूल इज यूज फॉर सिलेक्टिंग अ area of a picture and making changes. Now please do this homework, that is this 5 questions are to be done in the computer copy, and you can submit this after the Chhat Puja, that is on 22nd you can submit the homework. Okay children, so computer copy में आपको ये homework करना है और बिल्कुल आप याद करके ये कीजिएगा. Okay, thank you children for watching today's class.